The Spectrum Autism is a support group committed to create awareness about autism and the role of the community when it comes to raising special needs children and their families. Empowering parents is the theme for 2023 on the Spectrum Autism. It's our Facebook group, you can check there. It is a series designed where mentor parents share their lessons for life. Myself, Anshika Agarwal, mother of an 8-year-old very charming boy Abhyansh, and an architect by profession and founder of Sri Radhika Hub. Our guest this evening believes that every human body has a mind to think and express, and she considers herself very fortunate that his son Akshat gave him the opportunity to work on that belief. She is a mother to a 17-year-old young adult Akshat, who is on autism spectrum. Akshat is a co-author to the book Talking Fingers and a budding poet. She herself, she herself is a YouTuber, blogger, and a well-known to teach how to use ACC apps. So let's welcome Mrs. Ritu Rassay. Welcome, ma'am. Thank you so much, Anshika, for a lovely introduction. And by the way, Akshat is going to complete 19 next month. So Okay. 19-year-old. And So thank sorry you. for that. It's okay. Thank you, Spectrum Autism. Thank you, Shivali. And most importantly, thank you, Padma and Chitra, for giving all of us parents to this opportunity. Thank you so much. So, ma'am, how are you celebrating Akshat when he's a talk of the town all over as the co-author of the Talking Fingers? Oh, yeah, it was a great moment. Actually, if I say in Akshat's word, for him, it was an excellent opportunity. Writing for the book, it was an excellent opportunity. He said that the book has a huge, what to say, huge opportunity for him to create awareness on neurodiversity, and he was happy that his opinions and his views are published. So बहुत अच्छा ये एक एक्सपीरियंस रहा उसके लिए. And for me, yes, it was equally important, equally joyful moment for me also, because I think कि Talking Fingers ने एक वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया अक्षत के लिए और बाकी सारे ऑथर्स के लिए, where they can show that they are not only think, but they can have their views and opinions on different things. है ना. इससे पहले मतलब अक्षत को लोग इतना सीरियसली कभी लेते नहीं थे, लेकिन जब से ये बुक आई है तो अभी लोगों की एक एटीट्यूड में, एक परसेप्शन में मैंने चेंज देखा है. So the Talking Fingers has actually bridged the gap. And it's an important step towards the inclusion. So बहुत change लाया है Talking Fingers ने. Very good, ma'am. Very good. And thanks for Padma and Chitra for this. Very good, ma'am. Very good. So, ma'am, see, this is the present, and this in the future we are seeing Akshat on very good heights and all. But I want to take you to the flashback. When did you came to know about Akshat? Like he's lying on this spectrum, and what was your first क्या आपका पहले वो expression था कि what is this, and how did the journey started with that? So you took me to 18 years before. So like any other parent, हमारा भी वैसे ही experience था when we came to know कि कुछ milestones delayed हैं, and वही सारा process start हुआ, pediatricians के पास जाना और ये. Then by some reference we
got the Ummeed Child Development, got to know about Ummeed Child Development Center, and there Dr. Vibha Krishnamurthy had diagnosed him. So Okay. we didn't know anything about autism. ये भी नहीं पता था autism का. And then they suggested us कि ये autism है, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो लाइफ लॉन्ग रहने वाली है. एंड पता नहीं, मैं अभी भी उस चीज के बारे में एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि उस वक्त कैसा माइंडसेट था कि सडनली यू कम टू नो ना कि योर चाइल्ड हैज डायग्नोज्ड विद सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटी. आप कभी सोचते नहीं, ही इज माय ओनली सन एंड ही वाज माय फर्स्ट चाइल्ड. सो यू कैन ऑल्सो इमेजिन कि जब हमारा फर्स्ट चाइल्ड होता है तो हम बहुत कुछ सोचते हैं उसके बारे में. एंड Definitely. दैट टाइम कहीं दूर दूर तक डिसेबिलिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं था. So only thing I was thinking during all my pregnancy was कि भगवान बस जो भी हो अच्छा हो ना, healthy baby हो. That's Yes. all I was thinking about. और फिर जब ये सब चीजें पता चला तो obviously it was very difficult to sink in. बट जब वहाँ डायग्नोसिस हुआ उसका एंड उन लोगों ने बताया कि दो दिस कंडीशन डजंट हैव एनी मेडिसिनल ट्रीटमेंट बट थेरेपीज आर स्टिल देयर एंड विद थेरेपीज we can go somewhere or we can reach somewhere. So that gives us a hope. उससे काफी लगा कि चलो हम कुछ तो कर पाएंगे. कुछ पता नहीं था उस वक्त भी कि कहाँ पहुंचेंगे, कैसे करेंगे. बट स्टिल इट गेव मी सम काइंड ऑफ होप कि कुछ करेंगे. So that's how it started. I मतलब decided to do the mother child training program at Ummeed. वहाँ पे रह के मैंने वो 3 months का मदर चाइल्ड किया. उसके बाद फिर दिल्ली में भी एक मदर चाइल्ड ट्रेनिंग किया. सो ये उसका पूरा अर्ली इंटरवेंशन हुआ और उससे उसको काफी हेल्प मिला. पहले कुछ दिनों तक ऑब्वियसली मुझे वो बहुत हॉन्ट करता रहा कि व्हाई मी वो जो क्वेश्चन हम हमेशा रहता है. Yes, ma'am. वो बहुत, लेकिन थैंकफुली जो उम्मीद के काउंसलिंग सेशंस चलते थे साथ साथ में अलोंग विद ट्रेनिंग, इट हेल्प मी अ लॉट. एंड एक पॉइंट ऐसा आया वहां पे, एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जो ट्रेनर थी वहां पे उम्मीद में, शी वाज जस्ट 25 एंड शी यूज्ड टू वर्क विद ऑल ऑफ अस. सो उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि शी इज सो यंग, शी इज स्पिंस्टर एंड शी इज वर्किंग विद ऑल द किड्स सो डेडिकेटेडली. सो मुझे लगा कि अभी जब ये इतना कर सकती है तो आई एम द मदर. तो वो एक मोमेंट था ऐसा जहां मुझे लगा कि नहीं अभी तो करना है, जो हो सकता है, जैसा बता रहे हैं वैसा करना है. सो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और कभी फिर ये भी नहीं लगा कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है. क्योंकि जब मैं वहां देखती थी अक्षत का एक मुझे हैंड का एक ये बनाना पड़ा. उसका थोड़ा एक थंब है वो कंजेनाइटल है तो उसके सपोर्ट के लिए एक ये बनाने को बोला था ओटी ने. तो जब मैं वहां गई तो मैंने देखा कि एक मदर थी जो अपने 18 ईयर ओल्ड सन को गोद में उठा के लेके आई. तो ये इस तरह के इंसिडेंट जब देखे तो मुझे लगा कि नहीं, आई एम इन अ मच बेटर पोजीशन एंड आई कैन डू अ लॉट विद माय सेल्फ. सो इस तरह के जब इंसिडेंट्स देखने को मिले सो वो व्हाई मी वाला सब खत्म हो गया. एक्सेप्टेड the condition wholeheartedly and started working with it. So उसके बाद दिल्ली ट्रेनिंग हुई. तो इस तरह से अर्ली इंटरवेंशन का सारा उसका एक बेस बना और दोनों ही ट्रेनिंग से मुझे काफी हेल्प मिली. ही स्टार्टेड टू लर्न, ही स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड और इस तरह से जर्नी स्टार्ट हुई. Okay, ma'am, but we are very proud of you. You have done a very good job with Akshat. Very good job.
Bravo, ma'am. Bravo, really. आई डोंट नो, कभी सोच के नहीं किया कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा या यहाँ पहुंच जाएंगे. आई वुड से कि नाउअडेज पेरेंट्स आर मच फॉर्चुनेट, क्योंकि Yes, इतना ma'am. इंफॉर्मेशन है, बहुत अवेयर है. That's what I was about to ask you, because you have started it nearly 15 years ago. या And at that time, there was not much like knowledge about these things. It was not there in India. Now it's like 40 on 1 in 40 child. But at that time, it was in a very, very low percentage. But you did a very fantastic job in a limited resources and all, and very good job. And Akshat is like becoming very, very much a very good adult as per your guidance. पता नहीं, वो तो आई एम जस्ट ट्राइंग. एंड ऑब्वियसली आई वुड से कि उतने रिसोर्सेज नहीं थे उस वक्त. कुछ पता नहीं था. जैसे नाउअडेज पीपल आर टेकिंग सो मेनी थेरेपीज. स्पीच थेरेपी अलग से, ओटी अलग से है, सब कुछ बहुत. एंड along with that so many other things parents are doing nowadays. Yes, yes. At time, at least I was not aware of all those things. तो जितना जो भी हुआ उसका अर्ली इंटरवेंशन जो 3 months में हुआ, उतना उसमें ओटी भी होता था, उसमें स्पीच भी होता था, सब कुछ उसी में होता था. अपार्ट फ्रॉम दैट आई नेवर डिड एनी अदर थेरेपी. तो स्पेशली किसी थेरेपी पे ले जा रही हूँ वैसा कुछ नहीं किया. मुझे पता भी नहीं था कि अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं. वो उसी में चलता रहा. बट यस, उससे बहुत हेल्प हुई. और एटलीस्ट आई learn how to deal with him, how to work with him, how to understand him. वो सब मैंने वहां से सीखा. So that helped a lot. Okay, yes, ma'am. So, ma'am, as you told us that you were working on many areas with Akshat. So, when did you feel that there is a need to work on communication along with other areas? Because communication is the key. So, the key to adapt the environment nearby us. So, when did you feel that now communication is the area on which I have to work upon? Yes, that's a good question. So what was happening कि during the training ना उसको as speech wasn't developed. तो हम कर रहे थे काम, जो भी ट्रेनिंग के वक्त चल रहा था वो किया हमने, but somehow speech didn't develop. So in Umid also they suggested us to use sign language. So कुछ so अक्षत ने फर्स्ट टाइम जो साइन किया वो एक चॉकलेट का था. So इस तरह से ही asked for chocolate ऐसे. So we were so happy कि चलो at least he is able to communicate something. तो वो था. Then AFM में भी उसको sign language थोड़ा बताया था. And he picked up that signs also. But कहीं मुझे ऐसा लगा कि sign language is not visible. शायद पर्सनली मेरा ऐसा सोचना था. सो मुझे लगा कि आई हैव टू लर्न सो मेनी साइंस, फिर उसको याद रखना है. एंड फिर इफ आई लर्न एंड आई विल बी एबल टू कम्युनिकेट, बट व्हाट अबाउट अदर्स? इफ ही हैज टू कम्युनिकेट विद अदर्स, वो कैसे करेगा वो? सो फॉर दैट रीजन आई स्टॉप्ड यूजिंग इट. लेकिन व्हाट हैपेंड कि व्हेन ही वाज अराउंड 11-12 years, so suddenly he started having some behaviors. So jumping, screaming, or moving here and there. So these kind of behaviors have developed. So then I thought कि maybe because of sensory issues, he must be having those behaviors. So then I consulted his OT, and then OT told me कि नहीं, most of the behaviors are because of lack of communication. So वो अपनी बात वो express नहीं कर पा रहा है, and आप समझ नहीं पा रहे हो, so इसलिए वो behaviors हो रहे हैं. So again वो एक second moment, that was the second moment कि मुझे वो realize हुआ कि अरे बाप रे, कम्युनिकेशन पे काम करना कितना जरूरी है.
So and how frustrating he must be feeling कि मैं तो समझ ही नहीं पा रही, क्योंकि उसके पहले मुझे कभी जरूरत ही उसकी महसूस नहीं हुई। मैं बोलती जाती थी, वो करता जाता था, बोलती जाती थी, करता जाता था। वैसे ही होता था कि वो इंस्ट्रक्शन गिविंग ज्यादा था, है ना, और उसका सुनना तो था ही नहीं ऐसा। So that time I realized. फिर she told me about the AAC app, जो ऑगमेंटेटिव एंड ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन एप्स हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया, और एक ऐप के बारे में बताया, लेट मी टॉक। सो उन्होंने बोला कि ये आप ट्राई करो और इस ऐप से फिर उसको सिखाओ कम्युनिकेशन। देन आई स्टार्टेड यूजिंग दैट ऐप, और उसने अच्छा पिकअप किया उस ऐप से, एंड ही स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग हिज नीड्स वांट्स, कि अभी मुझे स्नैक टाइम में क्या खाना है। सो खाखरा खाना है या ममरा खाना है, सो चिप्स चाहिए या चॉकलेट चाहिए। सो इस तरह से धीरे धीरे से दो दो तीन तीन या चार चार चीजें लेकर के उसको मैंने वो सिखाना शुरू किया। एंड एवरी टाइम आई ऑब्जर्व हिम कि किस तरह से वो एक्सप्रेस करना चाह रहा है, या कैसे कहाँ कहाँ I can create the opportunity for communication, and accordingly I designed that app. So उस तरह से मैं उस ऐप को डिजाइन करती जाती थी। So every time I modified it according to his needs and requirements. धीरे धीरे फिर उसने वो needs बताना शुरू किया, फिर wants कि मुझे अभी टीवी देखना है या बाहर जाना है या खेलना है, जो भी है। सो उस पे आए हम, फिर धीरे इमोशंस पर आए। So receptive उसका अच्छा था, and I would say one more thing कि he is a very good observer, very keen observer and strong listener. So he was observing his environment. So the only thing is that कि expression नहीं था, doesn't know how to express. And once he got that medium to express, he started expressing. तो ऐप से वो मीडियम उसको मिल गया जिससे कि वो एक्सप्रेस कर सके। तो ऐसी बहुत सारी एप्स हैं। लेट मी टॉक तो अनफॉर्चुनेटली अब अवेलेबल भी नहीं है, बट इट वाज अ गुड ऐप टू स्टार्ट विद। और उसके अलावा कई सारी फ्री एप्स होती हैं, पेड ऐप में आवाज जो अभी इंडिया में सबसे ज्यादा चलती है। सो ऐसी कई सारी एप्स हैं जिनको यूज करके हम बच्चे को कम्युनिकेट करना सिखा सकते हैं। तो मैंने इस लेट मी टॉक को उसके साथ यूज किया, एंड स्टिल ही इज यूजिंग दैट। जो उसका डेली डे टू डे कम्युनिकेशन है वो उसी से करता है वो। Okay. So Akshat started expressing so elaborately with these apps only, or is there any other medium also? No, not elaborately. See, these apps are picture to speech or text to speech है। So इसमें Okay. कैसा होता है कि pictures होते हैं अलग अलग चीजों के, and the best thing is that you can design it according to your requirement. Okay, they can be customized. Yeah, they can be customized. Okay. Can be customized. So what happened कि if the child wants chocolate, so you can insert an image of chocolate in it, and whenever child wants a chocolate, he can just press over that image, and the app will say chocolate. Okay. That is picture to speech. तो picture पे click किया तो वो बोलेगी कि Okay. That's how it works. So इस तरह से उसमें ये था। अब लिमिटेशन क्या आ गई, हमने कुछ 4-5 सालों तक इस पे काम किया, ऐप के साथ काम किया। नाउ ओवर द पीरियड ही इज रीजनिंग आल्सो डेवलप। Okay. तो why वाला पार्ट है कि why are you feeling like, if suppose if he said कि I am feeling bored, so emotion में जाके उसने बोला कि bored. So if I want to ask him why are you feeling bored, so there comes the limitation because that app doesn't have any text feature. So he cannot write in it and show me oh, I am feeling bored because I do not have anything to do. So उसका reason.
सो वो Okay. नहीं था उसमें, तो देयर वाज द फंक्शनल लिमिटेशन ऑफ द ऐप. तो देन आई थॉट कि अभी इससे आगे अब क्या करेंगे. दो आवाज वाज देयर, बट आई हैडंट परचेस्ड इट टिल देन. तब तक मैंने उसको खरीदा नहीं था. सो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट ट्राई टाइपिंग. अब ये अगर रीजनिंग है, इसको कुछ और भी कहना है, सो लेट्स ट्राई टाइपिंग. सो देन इन 2018 आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज टाइपिंग. पहले भी मैंने अराउंड इन 2013 मैंने ट्राई किया था उसको सिखाने का, बट उस वक्त मुझे भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हाउ टू वर्क ऑन दैट. So, but now 2018 तक आते आते I had some ideas in my mind कि कैसे काम करना है. So I started it again, and luckily I got in touch with Miss Simi Vasu ma'am, जिन्होंने मुझे इनिशियल स्टेजेस में काफी इनपुट्स दिए कि किस तरह से हम करते. wherever I get stuck, तो I asked her कि मैम अभी इसके आगे क्या करना है, इसके आगे क्या करना है. So she used to guide me कि ऐसे कर सकते हैं. And she was the person who मतलब आइडेंटिफाई कि हाँ अक्षत कैन एक्सप्रेस इलॉबरेटली. मतलब मुझे तो जब उसने इलॉबरेट एक्सप्रेस करना शुरू किया तो मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ. मुझे लगा कि इट वाज सम काइंड ऑफ माइंड रीडिंग. So I couldn't believe it, but then she Miracle. We can say a miracle happened. miracle भी पता नहीं मुझे, but I couldn't believe it. But then she told me कि नहीं, he is expressing, you just continue your work and he is expressing, he is his thoughts only, you continue your. So फिर उससे तो step by step आगे गए. ऐप तक आते आते वो उसका मुझे बेस पता पड़ गया कि yes, he has thoughts in his mind, he thinks, he observes a lot. Now my job was to how to take it to the next level. I have to shape him, I have to mold him accordingly. Okay, so as you said, Ritu, like things were going like accordingly what you were thinking and what Akshat was learning. But were there any challenges also during that journey which you faced, like what you planned, but that not मतलब वो हुआ नहीं फिर वो plan, or otherwise something like that, or any other challenges? Challenges तो I would say हर स्टेज पर थे. हाँ, correct. जब अर्ली इंटरवेंशन चल रहा था तब भी थे, फिर आगे भी थोड़े थोड़े आते ही रहे. टाइपिंग जब मैं सिखा रही थी उस वक्त का एक आपको बताऊंगी कि जब मैं उसको सिखा रही थी तो आई वॉज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि व्हाई ही इज नॉट गेटिंग द लेटर्स. मतलब he was not able to identify the exact letter. Suppose उसको अगर D टाइप करना होता था तो he either he used to type S or F और R और C, मतलब साइड के ऊपर नीचे के टाइप करेगा, बट he wasn't able to type the D. So उस पर मेरा बहुत टाइम गया and I was not able to identify कि what exactly the problem is. So बहुत मतलब मैं इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि एक पॉइंट पे मुझे लगा कि नहीं अभी छोड़ दो, इसको नहीं आएगा. तो वो मेरा बहुत उसमें मेंटल भी बहुत ज्यादा मैं फ्रस्ट्रेट हुई. उसका भी शायद क्योंकि मेरा फ्रस्ट्रेशन कभी कभी उस पर भी फिर निकल जाता था. लेकिन फिर जब हमने सिमी वासु मैम को बड़ौदा बुलाया था एंड व्हेन शी असेस्ड हिम, तो वहां पे एक विजुअल परसेप्शन का एक छोटा सा एक्सरसाइज उन्होंने दिया एंड ही कुडंट डू इट. तो देन आई थॉट कि अच्छा हो सकता है बिकॉज ऑफ विजुअल परसेप्शन ही wasn't able to do this or he wasn't able to scan the letters. So वो फिर धीरे धीरे उस पे काम किया और उसको ठीक किया. So इस तरह के challenges आए अभी मतलब 2020 से जब उसने काफी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई तभी उसका अग्रेशन भी स्टार्ट हुआ.
और करीबन वो भी 2.5 years तक चला. And that was also very mentally draining for me. तो challenges हर बार थे, हर जगह थे. केवल डील कैसे करना है वही हमको प्लान करने करता. तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप किया उसको, और उससे भी निकल के बाहर आए. Yes, ma'am. You came up very nicely with the flying colors, ma'am. You have done such a great job with Akshat. And ma'am, like yes, you have taught Akshat so many things. He has learned so many things. But what are your learning as a parent? As a parent, what you have learned and what you will suggest other parents also, like because it hampers mental peace a lot for a parent also. So, what are your learnings as a parent along with when you were teaching Akshat or for life actually? सो जब उसका मतलब टाइपिंग थोड़ा बिल्डअप हो गया, उसके बाद जैसे मैंने बोला कि वो एक ऐसे स्टेज पर आ गया था जहां ही वाज एबल टू एक्सप्रेस. लेकिन मुझे अभी लगा कि अभी यहाँ तक आ गया है, यहाँ से अभी नेक्स्ट लेवल पे उसको कैसे ले जाना है. So for that I worked on his language, on his executive functioning, on his cognition, emotion, सब पे थोड़ा थोड़ा धीरे 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 काम किया. I used to observe him a lot. So कि वो कैसे सीख रहा है, कहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे मुझे अपने स्टेप्स को और ब्रेक करना होगा, और पीछे ले जाना होगा, थोड़ा और सिंपल करना होगा ताकि he would understand it. So इस तरह से कोई ऐसे लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी I never followed, but then I just focus on the present. अभी आज ये कर रहे हैं, so अभी इस पे ध्यान देना है. So that's how I work. And I would say okay, I would actually I would divide my learning in 3 parts. First one is, I would say, PPE. So first P is priority. I have defined my own priorities. So when we were in early intervention stage, that time उसके लिए therapies बहुत जरूरी थी. So वो किया सब कुछ, उस पे फोकस रखा. आफ्टर दैट आई रियलाइज कि अभी लाइफ स्किल्स, एडीएल्स, ये भी साथ साथ में इम्पोर्टेंट है. सो वहां पे फोकस शिफ्ट हुआ ज्यादा. थेरेपी शायद थोड़ा बैक स्टेज आई. सो वो किया. सो एवरी स्टेज आई सेट माय प्रायोरिटीज, and accordingly second P is plan. So I planned according to my priorities, and then third one is E, to execute. So I set my priorities, plan according to it, and then execute. So that's how I was able to work on a reasonably consistent basis. And the second part is observation. I observe him. I always observe him. How he learn, how he observe his surroundings. So जब मैंने उसके लैंग्वेज पे काम किया ना, और जिस तरह से ये कन्वर्सेशंस हमारे स्टार्ट्स हुए, सो वो उसी ऑब्जर्वेशन से हुए कि इतना गाना सुनता है तो गाने पे क्या सुनता होगा. So let's talk about the song which you are listening. So one fine day we just sit and started talking about the song. So that's how that conversation started. और मुझे पता लगा कि अच्छा ये सब भी सोच रहा है. Many feelings and emotions he expressed on his own. मुझे कभी भी मैंने उसको नहीं सिखाई. So I shaped them. उसको थोड़ा और फिर आगे बढ़ाया कि अभी उससे आगे हम क्या बढ़ते. अगर ये एक फीलिंग आ रही है, सो उस फीलिंग को आगे और उसका कितना वाइडर स्कोप हो सकता है, उसका एक वाइडर परसेप्शन, उसकी थिंकिंग को एक शायद मैंने थोड़ा बढ़ाया और आगे. बाकी इट वाज ऑल देयर. सो ऑब्जर्वेशन, एंड देन सेकंड इज गाइडेंस.
So guidance, I was very lucky कि मुझे कुछ बहुत ही amazing parent professional की guidance मिली. Simi Vasu ma'am was there, then Akila ma'am, Miss Akila Vaidyanathan. So उनके मैंने series of webinars attend किए, and most importantly Miss Archita Basu, who was still guiding me. तो उनकी वजह से जो आज मैं ये सब चेंजेस उसमें देखती हूँ, जो उसकी डायनामिक थिंकिंग डेवलप हुई है, द वे ही टॉक्स, ही एक्सप्रेस हिमसेल्फ, जो एक मैच्योरिटी उसमें आई है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हर गाइडेंस कि कैसे उसकी कॉग्निशन पे, इमोशंस पे काम करना है. तो वो, एंड थर्ड इज रीड. सो रीडिंग मैंने साइमल्टेनियसली ऑटिज्म के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ती रही. ये ऑब्जर्वेशन, गाइडेंस एंड रीडिंग्स, दैट आल्सो हेल्प मी अ लॉट. एंड द लास्ट पार्ट इज कि आई बिलीव टू वर्क इन प्रेजेंट. कभी भी शुरू से लेके अभी तक कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि अच्छा वो वहां पे पहुंचना है तो वो सोच के काम करना है. आई जस्ट फोकस्ड ऑन इन प्रेजेंट. आज ये करना है, अभी ये कैसे होगा उस पे ध्यान रखना. बाकी फिर भी देर कभी भी नहीं सोचा था कि he would be able to communicate in such an amazing way. कभी नहीं सोचा था कि he would be a co-author of a book, or he would be able to express in some poetic language. So I just kept on working, and that's how it. Very nice, ma'am. And such huge names you have taken. Malab, if we will get such good guidance, if someone will get such good guidance, then it's like malab, a blessing from God. Yeah, So this is very true. yeah. So, ma'am, so Ritu, can you please assist us about some of the apps which we can use with our kids or the parents who will be needing these apps? Because many parents want to know. There are many questionings popping up, like what kind of apps, and please name some apps which the parents can use for their kids, for their non-verbal kids. See, there are two kinds of apps. Some are free and some are paid. Okay. Many free apps are there. When you search on Google, na, free AAC apps, Google Play Okay. Store में जाके आप जब search करेंगे, so you will see some of their Jello app है, और एक कॉम बोर्ड करके है. कॉम बोर्ड में कुछ पोर्शन दे प्रोवाइड फ्री, एंड कुछ फिर वो चार्ज बेसिस पे करते हैं. तो some free apps are there. Otherwise पेड ऐप में आवाज एज अ कंप्लीट पैकेज, उसमें सारे फीचर्स हैं. सो यू बिगिनर टू एडवांस कम्युनिकेटर कैन यूज दैट ऐप. ओके, ऐसा है. एंड जस्ट टू ट्राई कि आपको पहले ट्राई करना है कि बच्चा कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, यू कैन ऑलवेज ट्राई विद अ फ्री ऐप. आप कोई फ्री ऐप में यूज करके देख सकते हैं कि हाउ द चाइल्ड रिस्पॉन्ड. And then you can see in my personal experience, Akshat was earlier, he's still using Let Me Talk, but now he can use Avaz also. मुझे पहले लगता था कि एक अलग ऐप यूज किया है, फिर एक दूसरी ऐप यूज करेंगे तो whether he would be able to switch or not, but he was comfortable यूजिंग बोथ द ऐप. मतलब वो अभी दोनों कर लेता है, वो लेट मी टॉक पे भी कर लेता है, आवाज भी कर लेता है. सो ही इज कंफर्टेबल विद बोथ द एप्स. Okay, that's nice. I hope the parents who want to use such apps, they have got such immense knowledge about those. So, ma'am, when you have shaped Akshat's presence so beautifully, so nicely, so now you must be having, like, he is writing poems, he is listening songs, he is communicating, he is expressing himself very nicely. So now what? Now, what are your future plans? What about Akshat's future? What about your future? What about your both future? So we would like to know about your future plans. फ्यूचर प्लान्स तो ऐसा तो कुछ आई हैव नॉट थॉट ऑफ एनीथिंग, बट यस, दो चीजें हैं
कि immediately तो I am working with him और उसको कैसे develop करना है, and most important for me is his happiness, he is comfortable, क्योंकि हम एक aggression वाली stage से अभी अभी निकल के आए हैं, so I don't want to push him much, so whenever he feels comfortable in whatever work he feels comfortable, I am okay with it. So that is the most important thing to me. But हाँ, साथ में ये भी है कि now he is an adult, we are also aging, I have developed some health issues also. So I have to prepare him for the future, and we also have to look for some future options. So वो एक एरिया है जहाँ पे हमें भी कुछ चीजें एक्सप्लोर करनी. आई वांट कि an ecosystem will develop where he won't miss us, ना कुछ सपोर्ट सिस्टम, एक इकोसिस्टम शायद डेवलप हो जाए जहाँ इतना वो हमें मिस ना करे. एंड आई वांट टू प्रिपेयर हिम मेंटली फॉर दैट स्टेज. So that time, obviously that time will come. So I want to prepare him mentally for that time. And I am working towards that only. ये है. और तो That was so emotional, ma'am. See, मतलब कि we want our child to be self-independent and everything so that he can shape his future well. And our best wishes to you and Akshat. You both are doing very well for the society, for yourself, for Akshat, everything, man, everything. thank you. And Thank you so any conclusion note you want to say to our parents, and like what we have seen in a society, like the parents whose children are like suffering from any sort of disorder. I won't say any type of disease or anything, it's a disorder only. So any conclusion message to those parents who feel disheartened, or who believe that their life has upside down now? So any conclusion message for them? See, I would say accept and don't expect. That's the only message I can give. Accept the child wholeheartedly and don't expect anything. Just stay in. I used to say everything. See, when exercise, Akshat exercise daily. And when he exercise now, I used to speak some affirmations for him. And I speak to him ki live in the present, feel the present, and think about the present. So I think that's what we also have to embrace in our life. Just think about the present and live in the present, and accept your child wholeheartedly. Now, everybody has his or her own capacity or ability, and one cannot go beyond that. But expect and just accept. Yeah, such beautiful words, ma'am. It was a very beautiful session. Thank you so much, ma'am, for such learnings and for giving immense courage to all of us, ma'am. Thank Hope you to so see you much. again sometime, ma'am. Thank you to you and to Spectrum Autism. Thank Yes, you. ma'am. God bless you and Akshat, ma'am. Give our regards to him. Okay, bye, ma'am. Thank you. Bye.